रहमतुल्लाहि व बरकातहू, इमामुल अंबिया, सैयदुल मुरसलीन, सरकार दो आलम, खातिमुन नबीन, ताजदार मदीना, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam was born on 12th Rabiul Awwal Iswi. Allah Ta'ala sent thousands of Anbiya and Rasul in this world to spread the message of Islam. Out of all, Nabi Sahib's position is held in high esteem. Allah Ta'ala has sent you in this world so you could spread the message to the followers of Islam. In doing so, Nabi Sahib get a great deal of success. You showed right path to the people who were misled and made them more important and auspicious than angels. People accepted Islam and gave the message that remember, there will be no Nabi and no Ummah after me. So you all will worship Allah by reciting namaz 5 times a day, keep roza, give zakat happily if you are belonging, and to go to your Almighty's Allah's house, that is to go for Hajj. When all the work was complete, Nabi's time came of wafat, which he was knowing and had mentioned and informed people like Hajjatul Wida time, and informed people, after this I will not perform Hajj with you all. On 12th Rabiul Awwal, Nabi went to Jannatul Baqi Qabristan for namaz janaza. When after returning, got headache and feverish. Illness became severe, because of which he had came into an unconscious state. A day before wafat, Nabi asked for 7 gold coins to be brought, which he had, and give it as sadaqah, and made some wills by saying, if I had beaten you back, then my back is here for you to beat me. On Monday, at the age of 63 years and 4 days, Nabi went to meet his Allah. On hearing his sad demise, all the followers were such in great sorrow that cannot be described. After giving ghusl, Prophet was kept in the same room where he was taken, discussed and enlightened, and was buried after namaz janaza. Our beloved, our Nabi, our Aka, who has faced so many hardships, lived his life in simplicity and poverty, is an example for all of us, a life to be cherished and worshipped. May God help us to lead our life as the beloved Prophet has led, and to follow his path and to do what is right. May God protect our Islam and his followers. Ameen summa ameen. Thank you. बच्ची ने अंग्रेजी में बारगाह रिसालत की चंद झलकियाँ पेश की हैं. आप प्रोग्राम के आगाज़ से पहले हमारे मेहमान खुसूसी का इस्तकबाल, आपका इस्तकबाल किया जाए. जनाब प्रोफेसर पुरुषोत्तम साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं, मेघवाल साहब, और आप बहुत ही रहमदी शख्सियत के मालिक हैं और पूरे नीमच के अंदर अपनी खिदमत देने के लिए भी तैयार रहते हैं. तालीम के मामले में अगर आपको किसी भी किस्म की ज़रूरत है तो प्रोफेसर साहब हमातन तैयार हैं आपकी खिदमत करने के लिए. और हमारे ये 24 मदरसों के बच्चों का जब आपने सुना, बेहद मसरत का इजहार किया, और जो आप इनामात देख रहे हैं उसमें बहुत कम से कम 5,000 रुपये के इनाम आपने अपने नीमच के शहर काजी मौलाना सद्दाम हुसैन साहब, हजरात गिरामी, आप हजरात बात यहाँ पर हाजिर हैं, और उनकी तकरीरों से आपने ये ख्याल फरमाया कि हमारी नौनिहाल भी तालीम के अंदर किसी से पीछे नहीं है. अभी जब इनामात तकसीम होंगे तो आपको ये जानकर बहुत मसरत होगी कि हमारे शहर के नौजवानों ने इल्म के मैदान में भी झंडे गाड़े हैं, और बड़े ने ICS, कंप्यूटर साइंस तालीम हासिल नहीं किया. फरमाइएगा. जनाब शहर काजी साहब ने हमारे प्रोफेसर साहब का इस्तकबाल किया, मेघवाल साहब का, और आपकी तशरीफ़ आवरी से हमें निहायत ही मसरत है. हम हमारे शहर नीमच के